Atmaramji, our Hindi Dramsoc chief, initiated us into this beautiful practice. He said, "Beta, stage जो होता है, वहाँ सरस्वती देवी का वास होता है. जब आप स्टेज पे आएं, शीश झुकाएं और उनसे आशीष लें." Ladies and gentlemen, lots of wonderful teachings came my way through the Scindia school, but before I dwell on that, let me give you a little peek into the kind of boy I was before I joined school. So I come from a family of poets and storytellers. My great-grandfather was a poet. He was a teacher of English, Urdu, and Persian. He fathered 5 sons. 3 of them dedicated their life to the arts. My grandfather, Dinanathji, was an actor, poet, writer, director. His 2 younger brothers were Urdu poets all their lives. My mum's grandmother, Ammaji to us, was the one who introduced us to the beautiful joys of storytelling. She was a master storyteller. Ghost stories, folklore, mythological tales. She knew them all and she told them all with great dramatic intensity and with great gusto. Her son, my Nana, although a railways man, but he had a funny side to him. और दिन के जितने बोरिंग उनके अफेयर्स होते थे, शाम को वो ह्यूमर में कन्वर्ट करके he would regale us. My अम्मा, my dear mother, हमारी फैमिली में मशहूर था कि 3 घंटे की हिंदी पिक्चर अन्नू 5 घंटे में सुनाती है. क्यों? क्योंकि अम्मा हैड एन आई फॉर डिटेल. एंड समटाइम्स द चिल्ड्रन भी से, अम्मा लेकिन आगे क्या हुआ यार? एंड शी से, पहले ध्यान से सुनो. सो ध्यान से सुनो became a mantra very early on in life. Papa was a maskhara, striking up random conversations with random people, and he had a great tonal memory. Inflections, tonality, accents, the way people walked, the way they talked. He would regale us. A boy born into a family like that, and with great encouragement from my parents, it was almost natural कि भाई हम भी स्टेज पे आते. तो मैं 5-5.5 साल का उम्र का हूँ और एक छोटी सी मेमोरी है. मैं ऐसे ही एक ऑडिटोरियम में हूँ, अम्मा पापा मासी मौसा ऑडिटोरियम में बैठे हुए हैं. Suddenly the mic is lowered, brought to my height, and so there I am. Ladies and gentlemen, the poem I'm going to recite before you is entitled The Cane Bottomed Chair by William Makepeace Thackeray. And on and on and on. Amma and Papa both had beautiful smiles, gorgeous smiles. And the reason for that was pretty simple. They lived their lives with the heart at the center of their beings, as the core of their being. And all life decisions, life choices were made with the heart as the guiding principle. And they'd often tell us, "Beta, love is the key that opens all locks, and a smile is its weapon. So do keep smiling a lot." Armed with all these teachings, I came to the Urvai Ghati, the beautiful Scindia school, and a lot of learnings have stayed with me. The world is one, and despite all our differences, we all are one. Scindia gives you an opportunity to study with boys who come from all across the country, in fact, all across the globe. And so the world became our domain very early on in life. Studying with the boys, growing up with them away from home, sharing intimate moments, sharing our trials and tribulations, you knowing my weaknesses, I knowing your vulnerabilities, didn't matter. If I loved you, it was despite that, it was in spite of all our differences, and that's something that has stayed with me. While in school, I was a keen sportsman. Cricket, hockey, football, मैं सब खेलता था. And Sharif Ahmed Sahab, our cricket coach, instilled some great learnings in us. He said, "Beta, you play the game with your heart, your body, your soul. You play the game to enjoy the game. You play the game to become a reliable team player. And you applaud when your team does well. But remember, more importantly, that when the opposing team does well, you applaud for them equally wholeheartedly." And that is something that's also remained with me. I'm never a conjuice in my praise of others. Elocution, debates, dramatics, mimicry and impersonation came easily to me. And I have this memory. ठीक है, हम लोग OIT के नीचे एक green room है, hallowed place. We're all there, 50 boys, और हम we're part of a Vanar Sena in a play called Valmiki Pratishtha.
कोई अपनी पूंछ लगवा रहा है, कोई सर पे जूड़ा लगवा रहा है, कोई धोती बांध रहा है, लुढ़क रहा है, पुढ़क रहा है, ये सारी चीजें चल रही है. एक नर्वस एनर्जी, ओह माय गॉड, पैल्पेबल, थ्रॉबिंग एनर्जी. सडनली शांति. हम स्टेज पे जाते हैं, अपना जो भी हमें करना है हम करते हैं, वापस आते हैं. We're exhausted, but we love that exhaustion. It's just such a beautiful kind of exhaustion. While in school, I almost always played girls' parts, chokri's roles. And I wasn't shy. I wasn't sheepish. I loved it. और मुझे एक नाटक याद है, The Inspector General. And I'm playing this Russian nobility की princess type चीज. And मैं एक बड़ी खूबसूरत नीली सी ड्रेस है, उसमें shimmering pearls वर्ल्स है. And merrily I'm getting into it. कोई मेरे falsies लगा रहा है. Suddenly मैं हंसी सुनता हूँ. मेरी आंख खुलती है, वो सब गुंडे, मेरे क्लासमेट्स, बैचमेट्स मुझे देख रहे हैं, having great laugh at my expense, watching their buddy Raj turn into this chokri. Mimicry and impersonation came easily to me, and I remember holy celebrations के दिन, अब मैं लगा हुआ हूँ वहाँ पे, टीचर्स की, बैचमेट्स की, सबकी खिल्ली उड़ रही है, और कुछ चीजें मुझे आज भी याद है. एक मडार आने दो, जिससे आती उर्वाई घाटी, ऊपर नीचे का कम्युनिकेशन हो रहा है. ये आत्माराम जी, अरे भाई जोशी, आज शाम को रिहर्सल होगी. मिस्टर साही, our principal, stern, the date 30th January, location Senior Astachal. Today is Martyrs Day. Mr. Khan, our swimming coach, cut and clipped. 2 laps only, okay? 2 laps, no more, no more, no more. Astachal. For those of you in the audience who don't know what Astachal is, Astachal is that time of the day in the evening when the day is done and we're all sitting in a white kurta pajama in an OAT, open air theatre kind of place. Shanti se baithe, reflecting on the day. Now I must confess, while I was in school, it wasn't every day that I was thinking about the day, I'll confess. But the practice has remained with me, reflection. And I'm what you might call a reflective person. Whether it's an acting day or a normal day, I am forever thinking कि मैंने क्या नहीं किया, मैंने क्या किया, कल क्या करूँगा, परसों क्या करूँगा, all that. Armed with these beautiful teachings, I go to Delhi University, Hindu College. Apart from dramatics, elocution, debates, 2 new things enter my personality. Dumb charades. You know dumb charades, a game where you act out words and pictures. I became rather good at it. Represented college, बड़े prize भी मिल गए, मजा आ रहा है. The other thing was the camera. It was the first time in college that I faced the camera. हमारे 2 दोस्त थे, वो युव मंच एक हिंदी प्रोग्राम आता टेलीविजन पे, वो एंकर करते थे. अब me being comfortable in both English and Hindi, I said, भाई तू दोनों करेगा. Very soon, starting as a participant, I became an anchor, and I was anchoring Youth Forum and Yuv Manch. अब तो भाई बड़ा style, heady days, they were autograph दे रहे हैं, जेब में 75 रुपए का चेक लेके, feeling like a raja. Well, college over, I moved to Hyderabad to be with my dad. Tried admission in the law college, हुआ नहीं. लेकिन हुआ नहीं तो क्या है भाई? ड्रामा कंपनी थी, वहाँ फॉरेन गए, ड्रामा कंपनी में चले गए. अमल विमल कमल एवं इंद्रजीत, बादल सरकार साहब का नाटक, हम भी शुरू हो गए. Apart from that, Doordarshan and All India Radio. I was anchoring programs, doing this, that and the other. Busy man हो गया भैया मैं. But I was to get busier. And how? Shyam Benegal, the great Hindi film director, was in town to shoot a film called Mandi. The moment I heard Mr. Benegal is in town, मेरे पेट में कीड़े कीड़े, अरे भाई बेनेगल साहब को मिलना है, बेनेगल साहब को मिलना है. और मैं उनके होटल पहुंच गया, रॉक कासल. And suddenly I see Mr. Benegal. Walks, he goes to the reception, अपने कमरे की चाबी लेते, कमरे की तरफ जा रहे हैं, तो मैं उनको almost waylay, that's called, I almost waylay him, accost him, and I say, hello sir, my name is Raj Zucchi, and I'd like to work with you. He looks at me rather kindly, and he says, beta, when we come to make our films, we come equipped with our assistants, so thank you, but I like your enthusiasm. तुम यहाँ के मार्केट्स वगैरह से फेमिलियर हो? अगर हमें जरी लेना है, साड़ी लेना है, कुर्ता पजामा लेना है, कुछ जानते हो? मैंने कहा जी बिल्कुल मैं जानता हूँ. तो he said, well, you got yourself a job. You come every day with us in the unit bus. You stay at the shoot, you eat with us, and you come back in the evening. Is that okay? He's asking, is that okay? That's great, sir. Thank you. तो चलिए साहब, हम मंडी is the name of the film. All areas access pass है, चौड़े घूम रहे हैं, एक्टरों से दोस्ती हो रही है, खाने वाने खा रहे हैं, बड़े मजे आ रहे हैं, ये हो रहा है. कुछ दिन तक ये चला, फिल्म खत्म हो गई, and I went to Bangalore to work in an ad agency. Well, then
advertising, chill atmosphere, lots of parties, and the moment the parties were there, Rajuchi, in his element, going back to one of his early loves, mimicry. सबकी मिमिक्री हो रही है, बॉसेस की हो रही है, क्लाइंट्स की हो रही है, दोस्तों की हो रही है। एक पार्टी पे एक क्लाइंट मेरे पास आया, अरे यार राज, यू नो यू वेस्टिंग माय टाइम यार, यू शुड बी इन द मूवीज। आई शुड बी इन द मूवीज, हैव अनदर ड्रिंक सर। चले गए, लेकिन उनकी बात सच निकल आई। कुछ ही दिन बाद हमारी एजेंसी में एक साहब आए, स्ट्राइकिंग पर्सनालिटी, लाल बड़ी बड़ी आंखें हैं, सिगरेट पफ करते हुए, और मेरी बॉस से जाके गप मार रहे हैं। मैंने कहा अच्छा ये दोस्त होंगे हमारी बॉस के। जब वो निकले तो मैंने कहा सर मैम ये कौन थे साहब? कहता ही इज अ फिल्म डायरेक्टर। फिल्म डायरेक्टर सुनते ही मुझे मंडी के सपने आने लगे। हाँ 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 मजे। मैंने उनका एड्रेस लिया, शाम को उनके घर पहुंच गया। टी.एस. रंगा साहब, ये वो, मैंने ये किया, ऐसे ये किया, मैंने एक फिल्म में भी काम किया, थिएटर तो बचपन से किया है सब। He was impressed. He said, हाँ बिल्कुल, you work with me in the production department. Now ladies and gents, you might not know, production is the management, you know, the organizing sector of the movies. And so I became what they called a production executive. प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव बन गया। और फिर बड़े मजे आए साहब, शूटिंग वूटिंग देखी, कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन देखी वेखी मजे से ये वो। कुछ एक्टरों से दोस्ती हो गई, नाना पाटेकर, स्मिता पाटिल, गॉड ब्लेस हर। नाना साहब एक दिन एट द एंड ऑफ द शूट मेरे पास है, तू कहाँ रहता है? मैंने कहा सर बैंगलोर। बॉम्बे आ जा। मैंने कहा जी बॉम्बे आ जा। मैंने सुनी उनकी बात, बैंगलोर वापस आया, पैकअप किया, फेयरवेल पार्टी की और ट्रेन पकड़ी बम्बई। अगले दिन नाना के घर, नाना कहीं बाहर जा रहा था और हम ऐसे मध्य, तू आ गया? मैंने कहा हाँ मैं आ गया। चल, बोला चल। टैक्सी में बैठे, मैं पूछा कहाँ? तो कहता है यार मैं एक नई फिल्म कर रहा हूँ अंकुश, तो मैं डायरेक्टर को मिलने जा रहा हूँ, तू भी आ जा, हो सकता है तुझे नौकरी दिला दूँ। बड़े एक्साइटेडली गया उनके साथ, हम गए वेस्टर्न आउटडोर, वहाँ गाने की रिकॉर्डिंग चल रही है। ये डायरेक्टर साहब की तरफ गए, डायरेक्टर साहब इनकी तरफ आए, और डायरेक्टर साहब की ये हाँ मतलब ये कौन है? नाना ने बोला ये राज है, मेरे साथ अभी एक फिल्म में था, अच्छा लड़का है, इसको आप रख लीजिए असिस्टेंट। तो चंदा साहब ने मेरी शक्ल देखी, अच्छा अच्छा ये क्या क्या किया है क्या नहीं किया है, ये सब बातें हुई बड़ी अच्छी अच्छी। उसके बाद वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, यो बिकम माई असिस्टेंट, थर्ड असिस्टेंट, क्लैपर बॉय। सो आई बिकेम क्लैपर बॉय एंड आई एंजॉयड माई सेल्फ ऑल ओवर अगेन। अब वहाँ पे क्या हुआ, एक एक्टर ने बदमाशी की, वो आया नहीं, तो नाना पाटेकर फिर बिगड़िया गया, स्क्रिप्ट पढ़ी है? पढ़िए। आनंद का रोल। मैंने कहा भाभी? कह रहा हाँ भाभी करेगा? मैंने कहा करेगा, तो जा चिकना बन के आ जा। अब साहब मेरे बाल इतने लंबे, मेरी दाढ़ी इतनी बड़ी, एडवर्टाइजिंग लुक था। मैं जाके अपने बाल बाल कटवाए, दाढ़ी वाड़ी बिल्कुल मुड़वा के, बिल्कुल एकदम चिकना चोपड़ा बन के, तेल वेल लगा के, कज्जल वज्जल लगा के, मटकते फटकते मैं सेट पे आ गया। किसी ने मुझे पहचाना ही नहीं, सिर्फ नाना शातिराम। अच्छा, टुक मी टू द डायरेक्टर, ही सेड, चंदिया ये तेरा भाभी आ गया। दिस टाइम चंदू लुक्ड एट मी, अरे तेरा तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया यार। मैंने कहा जी नाना के बदौलत। हाँ तो तू तो भाभी लग रहा है, चल शूट करते हैं। शूट करते हैं, मैं एक्टर, शूट करते हो गया साहब। वहां चले गए हम शूट करने, शूटिंग वूटिंग हो गई। अब आई वॉज़न्ट नर्वस बिफोर द कैमरा बिकॉज आई डन इट बिफोर। और बड़े मजे आए, यूनिट में हमारी इज्जत कुछ बढ़ गई। हर आदमी मेरे पास है, आपने बहुत अच्छा किया, आप तो नए एक्टर हैं, कहीं से दिखा भी नहीं। और आपने, एक आदमी कहता है आपने लड़की का रोल बड़ा अच्छा किया। अब मैं क्या उसको बताऊं, लड़की का मैं 36 रोल कर चुका हूं ऋषि गालव की तपस्थली में। ये खत्म हुई बात, अभी राजोची एक्टर भी है, असिस्टेंट डायरेक्टर भी है, क्लैपर बॉय, जब मन करेगा करेंगे, ज्यादा एक्टिंग वैक्टिंग हो रही है। एक हमारे दोस्त दिल्ली के आया, कहते भाई बड़ी एक्टिविटी हो रही है। मैंने कहा हाँ जी। कहता है वो केतन मेहता नाम सुना है? मैंने कहा हाँ, फिल्म डायरेक्टर, नेशनल अवार्ड। कहता हाँ फिल्म बना रहा है स्टूडेंट्स के ऊपर, जा ये ले एड्रेस जा। अगले दिन मैं पहुंच गया। अब मैं केतन साहब को मिला, बड़े इम्प्रेस करने की कोशिश की कि सर मैं ऐसा बचपन से ही थिएटर कर रहा हूँ, स्कूल में भी और यहाँ भी, और मैंने 2 फिल्मों में काम किया, मंडी और ये वो। केतन रत्ती भर इम्प्रेस नहीं हुए। कहते वहाँ बैल्कनी में खड़े हो जाइए। बैल्कनी में खड़े हो गए भाई, अंधकार। कुछ ही देर बाद सूर्यदेव प्रकट हुए इन द फॉर्म ऑफ मोहन गोखले, द लेट मोहन गोखले, गॉड ब्लेस हिम। वो आए, केतन के दोस्त थे, केतन को गले वाले मिले, और बैठते वक्त बैल्कनी की तरफ नजर गई तो स्माइल दे दी। अरे उन्होंने स्माइल कह दी, मैंने तो इतनी बड़ी स्माइल दे दी, 1000 वाट बल्ब। देखिए स्माइल देने में कंजूसी मत करिए, ये आपको कहां से कहां ले जाएगी आपको कुछ नहीं मालूम, ठीक है साहब। अभी केतन और मोहन में फुस 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 फुस। थोड़ी देर बाद केतन
Okay, you're on. You come with us to Pune. We're making a film called Holi. You're on. Now go, pack your bags. Pack my bags. Now I'm in Pune. Ashutosh Gowarikar, Amir Khan, Amol Gupte, Rajat Dholakia, they're all big names today. But we all started on that film, Holi. फिल्म खत्म हुई तो मैं आमिर के पास पहुंचा. मैंने कहा भाई सुना तुम्हारे लिए फिल्म बन रही है, अगर उसमें कुछ हो ठीक ठाक तो मुझे बुलाना. कहता हाँ मेरे पास तेरा नंबर है, आई कॉल यू, बट यार जुच्ची अभी कुछ है नहीं. मैंने कहा कोई नहीं. मैं बम्बई वापस आया, आई वाज डूइंग अ प्ले. तो जब उसका शो होने का था तो मैंने आमिर एंड फैमिली को इनवाइट किया. मैंने कहा भाई आइए आप लोग भी. तो सब आए, शो हुआ, लोगों को बड़ा पसंद आया. हमने बाव लिया, ताली वाली बजी है. वो ग्रीन रूम पहुंच गए, वहाँ एक साहब आए और बड़े प्यार से हमारा हाथ मिलाया, बड़े गर्म दिली से. कहते हैं माय नेम इज मंसूर जी एंड आई एम डायरेक्टिंग द फिल्म फॉर आमिर. आई सेड जी must say you were superb and I'm going to give you a call. नौकरी. मैंने इमीडिएटली फोन किया अपने गुरुदेव को, श्री नसीरुद्दीन शाह. देखिए एक्टिंग के बारे में मैंने जो भी सीखा है छोटा बड़ा उनके चरणों में सीखा है. मैंने गुरुदेव को फोन किया. मैंने कहा सर ये हो गया. कहते भाई मुबारक हो, अब जाओ थोड़ा अच्छा काम करो. मैंने कहा हाँ. चले गए. QS QT क़यामत से क़यामत तक शुरू हुई. फिर एक दिन आया जब वो शूटिंग खत्म हो गई, और एक तीसरा दिन आया जब वो रिलीज हुई. और जिस दिन वो रिलीज हुई हिंदुस्तान में बम फट गया मोहब्बत का. Because the film was a super success, it was a love story and everybody loved it. The numbers were astounding, the business was great. Great love was being showered on us, and suddenly, from being unknown people, we became known faces, known names. Wow, the feeling was magical. और मैं तो भाई आसमान में उड़ रहा हूँ. मैं उड़ रहा हूँ, गुरु का फोन आता है. देखिए गुरु हमेशा करेक्ट समय पे फोन करते हैं, घर आइए. शाम को मैं घर पहुंचा, गर्म दिली से गले मिले. वाह तूने बहुत अच्छा काम किया है, पब्लिक को बहुत पसंद आ रहा है यार तेरा काम. मैंने कहा सर थैंक यू सो मच. कहते हैं तो मजे आ रहे हैं. मैंने कहा जी हवा में उड़ रहा हूं. कहते हैं भाई धरा पे आ जा, धरा पे आ जा. एक्टर्स बहुत जल्दी हवा में उड़ते हैं ना, उतनी जल्दी मुंह के बल गिरते हैं. दे फॉल फ्लैट इन देयर फेसेस एंड आई डोंट वांट यू टू सफर फ्रॉम दैट. जुच्ची हमारा ना बड़ा फ्लाइटी बिजनेस है, but I want you to remain grounded. And remember that life is bigger than the movies, never the other way around. I said, gee. He said, another thing, I want you to do a variety of roles because you're capable of it. You have the capacity. Number 3, there's only one person in the whole world who can make you a better actor, and that's a good director. So your desire, your hunger, your thirst should always be to work with a good director. मैंने गुरु की बातें सुनी. मैं घर आया, मैंने 3 मुगली घुट्टियां बनाई और टेक 2 3 मैं पी गया. वो आज भी मेरे पेट में है. नंबर 1, क्वालिटी नॉट क्वांटिटी. डू अ वैरायटी ऑफ रोल्स विच ऊपर वाले की दया से, गुरु की मेहरबानी से आई हैव बीन एबल टू डू. एंड नंबर 3, आई हैव ऑलवेज स्ट्रिवन टू वर्क विद गुड डायरेक्टर्स, गुड फिल्म्स, मीनिंगफुल सिनेमा, रिस्पॉन्सिबल फिल्म्स. और अब 40 साल हो गए एंड इट हैजंट बीन अ बैड जर्नी. इसलिए मैं क्या बताऊं आपको, कभी कभी ऑडियंस, नो, व्हाई डू आई डू दिस, व्हाट डज इट गिव मी? आई टेल यू व्हाट, इट गिव्स मी समथिंग दैट मनी कांट बाय. लव. Oodles and oodles of love. Once the audience likes you, they will love you. They love you to smithereens. And sometimes it gets overwhelming and begs the question, why do I deserve this? What have I done? Because all I've done simply is to follow my passion. So my dear young people sitting in the audience, develop a passion. If you have a passion, nurture it. Because you don't know वो क्या रंग दिखाने वाली है जीवन में. Ladies and gentlemen, I come to the end of my talk, and I'd like to share with you the epitaph I have written for myself, and it reads thus. Here lies our Zed. Lived a life following his passion, with a little help from my friends, and a heart full of love for all. Love for all. Om Hrim Shri Gurubhyo Namaha. Thank you, my dear teachers.
Thank you, Sindhya School, for making me the man that I am. Indebted eternally, eternally. Jai Ho.